show you this one of the like signature dishes we have in Penang. We call nasi kandar. So nasi kandar in English, it means that the rice served with the wooden pole. There's the wooden pole. Yeah, this is kandar. In Malaysian language, it means kandar. Yeah. These are the usual like ingredients or dish in the nasi kandar. So like usually we have like fried chickens. This in local we call ayam bawang. So it means that onion, fried chicken with onion. So this is one of the like signature like fried chicken we have in Penang. And usually, and you see they have like a different colors of like curries. So this is the main thing to make the nasi kandar taste good. When you go to a nasi kandar shop, you order just one plate of nasi kandar. You can ask them as per your taste preference which one you want. They can put some curry, eggs or chicken or fish, whatever. Yes, and if you tell them like kuah campur, they will get like almost every kind of like curries. Put it on your rice. Kuah campur. Campur, yeah, kuah campur. Kuah campur. K-U-A-H, kuah campur. Campur means mix. So let's do that. Kuah, it means like gravy. Let's do kuah campur. Yeah. आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो हसन। आपका शॉप कब से है यहाँ पे? हमारा शॉप तो 19 से हम तो वहाँ पे तिजारत किया था। वहाँ से यहाँ पे मुफ्त 1 ईयर अभी तो बदल दिया। यहाँ पे तो फेमस है था नसी कंडा तो ओल्ड वाला का वो खाना था। और मिक्स करी तो करते हैं, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होते हैं। यहाँ इसके लिए वो तो KL से वगैरह से तो आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। अगर छुट्टी के दिन आएगा है ना, वो तो बहुत लंबा क्यू होते हैं। यहाँ पे तो लैमशेंग भी है और कम्बिंग गोरिंग बावांग, वो तो फ्राइड लैम का है और सब तो है। और सबको मिक्स करके खाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसका नाम कैपिटन माजू क्यों है? हाँ, हमारा इससे पहले वो तो कहते हैं ब्रातो का नाम तो क्यू का है। यहाँ पे लोग आते हैं तो क्यू करते हैं। हाँ, उससे हम तो बदल जाए इसकी वजह से। वो हमारा मस्जिद है ना, इस मस्जिद का नाम मस्जिद कैपिटन कलिंग। और मस्जिद की वजह से हमारा नाम तो बदल गया कैपिटन का। तमिलनाडु में कहाँ से? हम तो तमिलनाडु में वो क्या रामनाथपुरम वहाँ पे। लेकिन हम तो यहाँ पे ये तो 5th जनरेशन का। मैं तो 5th जनरेशन, मेरा बाप भी है, वो तो 4th जनरेशन और दिस 5th जनरेशन। तो आपका बर्थ प्लेस है पिनांग? हाँ, पिनांग है। वहाँ जाते हैं तमिलनाडु वो तो छोटा उस वक्त तो गया था। अभी नहीं, अभी तो यहाँ पे फुल यहाँ पे। जो आप नासी कंदार मंगवाते हैं तो नासी का मतलब राइस होता है, और जो आपका कांदार है उसका मतलब होता है एक पोल जिस पे बैलेंस करके लोग पहले के ज़माने में राइस और करी बेचा करते थे, वो है। और ये जो डिश है एक तरह से इंडियंस मलेशिया में लेके आए, और ऐसा माना जाता है कि जो तमिल मुस्लिम थे दे ब्रॉट द डिश टू मलेशिया। हाँ, और उसमें यह था कि जब वो लोग यहाँ पे आए थे तो जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनको खाना सर्व करने के लिए ये चीज़ पॉपुलर हो गई। अब नासी कंदार आपको ऐसे स्ट्रीट पे बेचते हुए कोई मिलेगा नहीं। अब प्रॉपर शॉप्स हैं, अब ये सिग्नेचर डिश बन चुकी है पेनांग की, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मिलता है। जो हमने लिया है, नीचे राइस है, 4 तरह की इसमें करीज डलवाई है हमने। चिकन करी है, मटन करी है, फिश करी है, एक हनी बेस्ड सॉस है, फिर यहाँ पे कैबेज है, एक बॉइल्ड एग है, एंड देन यू हैव फ्राइड चिकन। On top of the fried chicken you have onion. That's also fried onion. There's the fried chicken with the skin, which is super crispy, and that's boiled egg, then the flavored rice. And some like nasi kandar places, they even have options for you, I mean the rice. So either white rice or in turmeric. Proper Indian food. Indian Muslim. Indian Muslim food. So Tamil Muslims are known as mamak. Yeah. Huh? Yeah. And local, yeah, we call them, we refer them mama. And Kerala Muslims are called kakas. Yeah. Yes, that's right. Yeah. बहुत ही उम्दा है। मतलब जो चिकन की ग्रेवी है, फिश की ग्रेवी है, मटन की ग्रेवी है, और जो हनी सॉस मिलाया गया है, जो हनी ग्रेवी थी, उसका एक बहुत अच्छा बैलेंस बन रहा है। और अच्छे से चावल में समावेश कर चुका है, और जो पैंडन लीव्स उसमें डाला गया है उसका भी एक अच्छा, आप कहें तो एक फ्लोरल
जो खुशबू होती है, जो टेस्ट होता है, वो इसमें आ गया। थोड़ा सा मुझे कहूँगा हल्का मीठा है, a bit sweet. Yeah, the honey. Honey yeah, sauce. Yeah. How would you describe the food culture of Penang? So Penang is, they call it the food capital of Yeah. Malaysia. Yeah. There are some reasons why Penang was considered as like a food capital, in Malaysia, because like almost every street and here you can see like street food, and like most of the like street food and here they are passed from generation to generation. So some like maybe this restaurant they are here since like 1900, and some they're been already like operating like since like 50, 60 years. So like from generation to generation, and they have like this kind of like what we say like the old taste, the traditional taste, which cannot be found in other places. ये जो डिश हमें नासी कांदार यहाँ पे खाया, ये यहाँ के फूड कल्चर को डिफाइन करता है। आप बात करें कोलोनाइजेशन की, कल्चरल एसिमिलेशन की या प्लुरलिटी को, तीनों को ये दर्शाता है। कोलोनाइजेशन से ऐसे जुड़ा हुआ है डिश कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे तो तमिलनाडु से, इंडिया के तमिलनाडु से काफ़ी जो इंडियन मुस्लिम्स थे उसको लेकर यहाँ पे आए, उन लोगों ने ये डिश बेचना शुरू किया। सेकेंडली ये कल्चरल एसिमिलेशन को भी डिफाइन करता है कि जब यहाँ पे मामक्स जो इंडियन तमिल मुस्लिम थे उन लोगों ने ये डिश बेचना शुरू किया तो लोकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। थर्डली आप बात करें प्लुरलिटी की, तो यहाँ पे जो इतने डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं उन सब ने इसको एक्सेप्ट भी किया। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू ईट नासी कांदार? No, so we can eat it like no matter breakfast, lunch, dinner, or supper, anytime as you want. And like most of the nasi kandar restaurant in not only in Penang, in Malaysia, they operate 24 hours. So they open late night. Yes, they Early morning. operate like 24 hours. Yeah. So we are sitting next to a mosque. It's a huge mosque. Yeah. So the majority of Malaysian population is Muslims. Yes. Yeah. And what about Penang? So Penang, we have approximately like 1.8 million of population, and Chinese is the most population we have in Penang. So we have like almost like more than like 50% of the total population in Penang. Yeah. And then Malay, India. Tea tarik. Yeah, teh tarik, it means pool. Tarik. Yeah. Full tea. Yeah. So like we have a lot of like British influence. So we started like green tea. We use the English black tea, and we put condensed milk, and then we put it to make it the bubbles at the top of the tea. So that they're different with like masala chai or milk tea and the teh tarik. That's the difference. अच्छी चाय है, थोड़ा मिल्की है, क्रीमी है, थिक है। चाय का फ्लेवर थोड़ा माइल्ड है, दूध ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे तो बैठ के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ही बैठा हुआ हूँ, वो भी इंडिया के भी कहें तो साउथ इंडिया के किसी शहर में, केरला के। और सब इंडियंस ही दिख रहे हैं यहाँ पे, जो अंदर शॉप पे जो चाय बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, वो हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। तो एक मतलब जो कोस्टल सिटी वाली फील होती है, वैसी आ रही है यहाँ पे आके। देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है इस शॉप का, टी कढ़ाई। आप जब केरला जाते हैं तो वहाँ पे चाय कढ़ा होती है, मतलब टी शॉप्स होती हैं। और जैसा विशन बता रहे हैं कि मलय में कढ़ाई का मतलब शॉप होता है, तो चाय शॉप। You haven't tried Penang famous samosa? Yeah. So this is the only samosa which has Michelin. Yeah. So for this place, my recommendation for the samosa is chicken samosa. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतनी दूर आके मलेशिया के भी पेनांग में आके, फूड कैपिटल में आके समोसा क्यों खा रहा हूँ। जैसा वैशन ने बताया हमें, इस शॉप को मिशेलिन गाइड में रेकमेंड किया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। इस शॉप पे अलग अलग वैराइटीज़ है समोसे की, मटन समोसा, चिकन समोसा, सादी समोसा, एग समोसा, वेजिटेबल समोसा। साथ में जो जो आप तमिलनाडु में जाते हैं वहाँ पे जो स्नैक्स होते हैं, जैसे आपका अनियन भजी हुआ, या फिर आपका तिरुवली हलवा होगा, इसको मस्कट हलवा अभी सर बता रहे थे वो है। तो हमने चिकन समोसा लिया है,
अब देखते हैं क्या सही में ये अच्छा है। पर एक बात तो है कि मिशेलिन हमारे हिंदुस्तान में अभी है नहीं। अगर हिंदुस्तान में आ गया तो उनका बहुत टफ टाइम होगा, क्योंकि हमारे तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जायके हैं। और कैसे वो रेकमेंड करेंगे, कितनों को रेकमेंड करेंगे, कितनों को अपनी गाइड में एंट्री देंगे। चलिए हम समोसा खाते हैं। चीयर्स। गुड। That's why we got Michelin. Yeah, it's sweet and spicy. Yeah. In fact, they have used lots of tomato in it. Yeah. Onion, tomato. Onion, tomato, yeah, chicken. हाँ, जो परत है इसकी बहुत ही खस्ता है। It's actually good. And the only samosa in Little India who had Michelin. The only one. So this place is Little India. Yeah. Yeah. So mostly people from Tamil Nadu and Kerala, they are living Yeah, here. yeah. Tamil Nadu and Kerala, both the states. Where are you from? India, which place? Sivakasi. Ah, Sivakasi. Famous for firecrackers. Firecrackers. Malaysia was colonized by Portuguese, then Dutch, and then Britishers. Only in Malacca. Only in Malacca. So Malacca is the only place who been colonized by Portuguese, Dutch, and British. Other than that, other cities, other places in Malaysia are under British. It feels like you are walking in India's Puducherry or Goa or Kerala. Ah, They yeah. have similar kind of vibes. Ah, okay. You know, like if, Oh, that's Trisha. yeah, Becha. Trisha. That's the Becha. Becha. Yeah. Becha, Trisha. Becha, Trisha, yeah. रिक्शा का रिक्शा। शाह हो गया Yeah. और ट्राईसाइकिल का ट्राई हो गया, बन गया ट्राइशा। So Georgetown is not only famous for the food, but also we are famous for the street art. So like we have different kind of street art here. We have this we call iron rod sculpture. We have murals, and we have murals with the real object, which means the mixed media art. This is one of the popular spots among locals. So this place, they are famous for this kway teow soup. One of the like signature dish we have in Penang. So kway teow in Chinese, it means that the flat rice noodle. Yeah. So you see the noodles, it looks similar like pad thai. Yeah. But in local we call it kway teow. This noodle is served with soup noodles. Yeah. So for the broth for these noodles, they use the chicken to simmering it, yeah, until it become like collagen, the color, yeah. And like usually like this noodle, we serve it with some homemade fish balls. So this fish, which we're using for the fish ball, we call in local we call it saito. Saito in Chinese it means that the West knife. This fish looks alike like a knife, so that's why we call West knife. This fish, yeah, and this fish is popular to use to make fish balls. The usual kway teow soup served with some chicken, pork, coriander, and some fried garlic and onion. There is another like important ingredient inside this kway teow soup we call pork lard. Pork lard, yeah, pork oil. So that's one of the important things to make this kway teow soup taste better. Yeah. And she has also lightly seasoned it with soy sauce. Yes. Huh? Yeah. Yeah. And this soy sauce is actually for this chili. Yeah. How's it? Yes. The fish ball is so plump Yeah. Yeah. and light. Yeah. Yeah, the name of this fish that we are using for this fish was called wolf herring. Yeah. So this food is popular among like our Chinese communities. Yeah. Because it's not too heavy, it's light, yeah, and not too oily. So this food usually like is served in
breakfast more than in dinner because like people want to take like some light foods, like in the morning, yeah, for breakfast. Which place is the origin of this dish in China? So from there's one place called Teochew. Yeah, Teochew. So like most of the Chinese and here we come from southern China. Some they come from Hokkien, from like Guangdong. Some are from like Teochew. Yeah, and this dish is origin from the Teochew, a city in China. एक तरह से ये कहा जाए तो कंफर्ट फूड है जो कि आप रोज़ खा सकते हैं, मतलब हेवी फूड नहीं है। What is it called? So this is one of the local drinks we have in here. We call it Hokkasai. So Hokkasai in Chinese dialect, it means that the tiger bites the lion. Yeah, Ho it means tiger, Ka it means bite, Sai it means lion. So why is it called the tiger bites the lion? Because in like many years ago, Ho and Sai, which means a lion, and tiger, it represents to Milo and coffee. Yeah, so that's why the Hokkasai, Milo mixture with coffee. And they've also added some evaporated milk. Yeah, evaporated milk and condensed milk. Yeah. It's bitter, Yeah. highly caffeinated. I'm not going to sleep for next 2-3 days. ये 20 रिंगट है और 1 रिंगट हमारे इंडियन करेंसी से आप एक्सचेंज करेंगे तो 17-18 रुपए का होता है। ये जो हमने खाया ये आपका 6 रिंगट का था। एक चीज़ हमने गौर की यहाँ पे, आप थाईलैंड जाइए या मलेशिया जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में आपको पानी पीने का नहीं मिलेगा, आपको पानी खरीदना ही पड़ेगा। तो एक तो पहले जो चीज़ फ्री होनी चाहिए उसके लिए आप पैसे दे रहे हैं, साथ साथ फिर प्लास्टिक वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ करना चाहिए, मे बी एक वाटर ATM मशीन लगाना चाहिए जहाँ पे लोग जाएं और ख़ासकर टूरिस्ट है जो प्लास्टिक वेस्ट से बचें और वहाँ जाके पानी भर लें। ऐसा कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। हमारी दरख्वाहिश है थाई गवर्नमेंट और मलेशियन गवर्नमेंट से। Yes, Vaishan, where are we now? So we are now at one of the famous spot among locals in Penang, which called the Prisgrave Street Hawker Center. So and here you can find almost like every signature dish in Penang at this place. Yeah. So inside you can see like almost like at least 10 kind of foods you can see inside of here. Just all local Penang street. Yes. Yeah. So this is one of the like signature like dish we have in Penang. So this is the loba, 5 spices pork roll. Yeah. So in this like roll, so we have like pork inside and with 5 spices. So the 5 spices that we are using in here is the fennel, cinnamon, cloves, star anise, and peppercorns. And also sometimes we put some jicama or turnip or like yam taro inside of this, and then we deep fry it. So this is the original loba. What's the skin? The tofu skin. Oh, bean curd skin. Yeah, bean curd skin. Yes. यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है श्रिम्प फ्रिटर्स। श्रिम्प में कॉर्न स्टार्च डाल के पाम ऑयल में तला जा रहा है। इनफैक्ट हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है मलेशिया से पाम ऑयल, बट स्ट्रीट फूड में ज़्यादा वही इस्तेमाल हो रहा है आजकल। नमकीन बनाने में वही इस्तेमाल करते हैं, स्नैक्स बनाने में वही इस्तेमाल करते हैं। कारण ये है कि पाम ऑयल में कुछ चीज़ें आप फ्राई करें तो ज़्यादा क्रिस्प निकलता है, बट उसका अपना एक हेल्थ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी है। और जिस मार्केट में हम लोग आए हैं ये पूरा एक स्ट्रीट फूड कोर्ट आप कह लें वो है। अलग अलग कार्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये कैसे काम करता है कि आप एक जगह टेबल पे जाके बैठते हैं, सर्वर आएगा, आपसे ऑर्डर लेगा और उस कार्ट से जाके फूड लाके आपको सर्व करेगा। तो जिस कार्ट पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम लोग लेंगे फ्राइड पोर्क रोल्स, लोबात और साथ में एक अनोखा अंडा है जो काले रंग का है, जिसको कंट्री चिकन एग बोलते हैं। और वो काला क्यों होता है वो वैसे बताएंगे। Why is that egg black in color? So there's a way that
we how to make this egg into black color. So we usually we use the chicken egg or duck egg to preserve it with clay, ash, and salt. Yeah, so we preserve it in these few materials for several weeks, and then after that we take it out and it becomes this color. So the egg is salty. And I was reading the wrapper. It says it's high in protein. Yes, and That's high great. and alkaline because of like preserving in the clay and ash and salt for Good for like health. several, yes. Good for health. So that's why it's like high like alkaline. इस कार्ट पे ऑयस्टर ऑमलेट बनाया जा रहा है, साथ में इनके पास मशरूम ऑमलेट भी है। तो करते क्या हैं ये, इनके पास एक घोल है जो एक बैटर है, वो रिफाइंड फ्लावर मैदे का बैटर है। पहले बड़े से तवे पे वो बैटर डालते हैं, उसके बाद 2 अंडे फोड़ के डालते हैं, उसको मिला लेते हैं। मिक्स करने के बाद ऑयस्टर्स डालते हैं, अगर आप मशरूम मांगेंगे तो मशरूम डाल देंगे, फिर रेड चिली सॉस डालेंगे, कॉर्न स्टार्च डालेंगे और उसको स्टर फ्राई कर लेंगे और फिर आपका तैयार हो जाएगा ऑयस्टर ऑमलेट। Which one are we going to try? Oyster omelette or mushroom omelette? Oyster is the Oyster? best. Yeah, oyster better. Let's go with oyster omelette. ये जो पूरी जगह है बिल्कुल पैक्ड है और आपको टेबल के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। टेबल के नेक्स्ट आप खड़े हो जाइए, जैसे ही लोग उठेंगे उसके बाद आप बैठते हैं। तो वही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ वाले कब उठे और हम बैठे। बट सबका अपना अपना खाने का स्पीड होता है, कोई जल्दी खाता है, कोई स्लो खाता है। बट लोगों को खाते हुए देखने का भी एक अलग मज़ा है। और मतलब यहाँ तो मुझे लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया में मतलब इट्स लाइक स्ट्रीट पार्टी हैपनिंग ऑल द टाइम। You're right. Wherever you go, like people are eating on the streets. Yeah. Huh? This is our culture, like eating on the street. Yeah. And even though it's hot, we're happy with this. Yeah. यहाँ पे 3 डिशेस हमारे पास हैं, 2 अलग अलग ड्रिंक्स हैं। यहाँ पे लोबार्क है, कंट्री सेंचुरी एग है जो कि काला है रंग में, ऑयस्टर ऑमलेट है, 4 और फन है। ये 2 तरह का जूस है, रेड और येलोइश, जो कि नटमेग जूस है। एक स्वीट है, एक सॉल्टी है। बनते हुए हम लोग तीनों को देखा है। ये आपका लोबार्क है जो पोर्क रोल्स हैं। ये जो ट्रांसलूसेंट ब्लैक एग है, ये काला क्यों होता है इसके बारे में हमें बता चुके हैं। ऑयस्टर ऑमलेट कैसे बनता है वो भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। बचा 4 और फन, इसके बारे में वैसे हमें बताएंगे। प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस डिश। Okay. So char hou fan in Chinese, char it means fried. So hou fan it means the thick flat rice noodles. So usually like this dish char hou fan, we serve it with a thick gravy. Yeah. So how do they make it? So at first, so they will take the hou fan with rice vermicelli, another kind of rice noodles, and put some soy sauce and stir fry it. After it's done, so they take it out and they start to make the gravy. So for the gravy, they use some chicken stock and put in some other ingredients like shrimp or like prawns, vegetables, pork, and eggs, and they mix it and to make it and some of course starch to make it sticky. After it's done, and then they serve it and put it on top of the noodles. And usually, like locals, we eat the char hou fan with the green chilies, the marinade chilies. Yeah, that is the one, the green marinade chilies. Yeah. So for the chili, it is sour more than spicy. So you have prawns, flat rice noodles, Pork, vermicelli, pork, egg, some green vegetables, Yeah. and the chilies, Yes. and lots of starch. Yeah. Huh? Yeah. So let's start with this. Should we dip it in any sauce? These two sauce, this one is the chili, spicy sauce, and this one is another like starch sauce. So how do they make it? So again, 5 spices and some eggs and starch, some dark soy sauce and soy sauce, and they stir it to make it sticky. So basically, this sauce is sweet. This is spicy. Yes. Which one would you recommend? So like locals, what we do is, if you want spicy things, so we mix it like this, Oh, and then so sweet and spicy. yes. Wow,
बाहर से जो बीन कर्ड स्किन है सुपर क्रिस्पी है, अंदर से एकदम जूसी और सकुलेंट मीट है पोर्क का, और साथ में ये स्वीटनेस और ये स्पाइसनेस ऐड करता है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट लेट्स ट्राई दिस एग, जस्ट लाइक जेली, Yeah. अगेन सेम थिंग। Yeah. It doesn't taste like egg. It's like you're having some jelly. Yeah. Let's try this. Oyster omelette. Sometimes with the oyster. If you like coriander, you can put some coriander on top of it. It feels like something explode in your mouth. Yeah. The texture of this oyster is like an egg yolk. Yeah. Huh? And there's something special about this chili sauce. Besides of chili sauce, they put some like chopped garlic and lime juice on it, some lime. Yeah. I think I need to taste the oyster on its own. The first bite which I took, I think it was more of an egg flavor. It's so creamy and juicy. Wow. Now char for fun. Wow. This flat noodles are so fluffy. The texture is totally different, like just now the soup noodle. Good. Very good. Punya menu ya? Huh? He said it's free for us. Oh, thank you, thank you. जो टेक्सचर है नूडल्स का काफ़ी स्टिकी है और फ्लफी है, और जो वेजिटेबल्स आ रहा है बहुत अच्छा क्रंचीनेस आ रहा है। इनफैक्ट एग में अच्छे से पूरा लिपट चुका है नूडल्स जो है। और बीच बीच में आपके पास पोर्क के पीसेस, जैसे पोर्क। Yeah. गुड, इवन आई लाइक दिस। तो ऐसा लग रहा है कोई कैंडी मिला के नटमेग का जूस बनाया गया हो। And why is it in two different colors? So originally it is in white color. It becomes red because of oxidation. Once you know the fruit like exposed in the air for several hours, it becomes red. How do you say thank you in Malay language? Terima kasih. Tarima kasih. That's right. Thank you. Yeah. And in Hokkien language and here local, we can say kamsia. 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 Yeah, kamsia. Kamsia. Yeah. And how do you say the food is delicious? Enak. Enak. In Malaysia language, delicious. Enak. और That's why simply enak. और सिंपली एनाक के साथ हम लोग ये फूड टूर कर रहे हैं। We are at one of the famous streets in Georgetown. We call the Chulia Street, and we are having a local dessert which is called ABC. There's coconut jelly. Then here you have watermelon and basil seeds. Then peanuts and basil seeds. There's condensed milk. So why is it called ABC? So ABC, actually this word is in Malay, we call air batu campur. Air batu, it means ice. Campur, it means mix. Mixed ice. Air batu campur. So is it a traditional sweet of Malaysia? Yes. Yeah. One of the our national dessert. Yeah, ice kacang. You can find it everywhere. Yeah. जैसे it's good Sweet and sour at the same time. and salty. Yeah. यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि
उससे आपको रिस्पाइट के लिए ये बहुत अच्छा है. Very refreshing. And the best part is it's not overly sweet. It's balanced, mild sweet. And the basic sweets are very good for health. I like the peanut. Me too. It's good. Good? Nothing like a cold beer in hot and humid weather. Yeah, Huh? exactly. So this is a local drinking place. Yeah. Huh? Yeah. It's a government authorized beer shop. Antarabangsa Enterprise. So Antarabangsa in Malaysia language, it means international. International. Yeah. So international enterprise Yeah. is government authorized, right? Huh? Government authorized shop. Yes. Huh? Yeah. So they got like a proper license to License sell shop. alcohols. Yeah. And this is the only place you can experience this kind of of like drinking alcohols. Yeah. Lager beer. 5% alcohol. ये फिलीपींस है. जो टाइगर बियर हमने पी थी वो सिंगापुर से है. उसमें 5% अल्कोहल था. इसमें 8% अल्कोहल है. प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर, वर्ल्ड क्लास. फ्रॉम सिंगापुर टू फिलीपींस. Yeah. थाईलैंड में हमने छांग पिया, सिंगा पिया, लियो पिया. यहाँ पे टाइगर बियर टेस्ट किया. अब हम टेस्ट कर रहे हैं रेड हॉर्स जो कि फिलीपींस से है. Cheers. Kingfisher super strong. Flavors 5000. हम लोग जालान चौरस्ता के कॉफी त्याम में हैं. कॉफी का मतलब कॉफ़ी होता है और त्याम मतलब शॉप. Yeah. So here we have pancake, chap ke tiao and Hokkien mee. आपका शॉप सालों भर खुला रहता है? एवरी डे? 7 days a week? Rose. आप बॉलीवुड मूवी देखते हैं? Yeah? बॉलीवुड मूवी? No. Nahi. I only watching fighting movie. एक्शन मूवी. Action movie. Here we have laksa. Yeah. Assam laksa. Assam laksa. Assam laksa. It's sweet and lemony.